Hello everyone, welcome to Career Launcher. Hello Riva. So today we have come up with some more and new quantitative aptitudes, quantitative techniques set. So in today's session we are going to discuss few more sets. We have discussed a couple of sets in the previous session. We are going to discuss a couple of sets in this session. So let's start. Fine. So. As you know, the test series is live, and uh, you can enroll for the test series. Now let's start. Hello, Priyanshi. How are you? So I hope you are doing well. Now, so everyone is fine. Riva, Priyanshi, doing good. Okay. So let's start the first set. What does it say? It says, Priyanshi, I'm also fine. So let's get on with this set. It says that a domestic airline company studies the data collected from its passenger log for 3 cities, right? I'm also good, Riva. So we are going on this. So now I'm just going to cancel out all the unnecessary information. So basically, there is a airlines that is collecting data. Three, okay. It was found during Diwali holidays, a total of 24,000 took their flights. Okay. So basically, how many people are using flights during Diwali? That is 24,000 people. Good evening, Chandralekha. Right. So, what is the total number of people who are taking flights? There are going to be 24,000, right? Now, those 25 people can be categorized into three categories, right? Adult male, adult female, and children, right? So basically, whenever I am going to write male, male means I mean this. Whenever I'm not going to say children are not going to be categorized as male or female, because the question itself mentions the categories uh, are three: adult male, adult female, and children below 5, right? uh, Hello, Anand. So there are three categories: male, female, and children. Okay. So the important point is this: there are 24,000 passengers and three categories. That's it. Apart from this, we have nothing in the first paragraph. So if I'm going to solve this set, so I am just going to write down total number of passengers, travelers are 24,000, and there are three categories. Apart from this, I am not going to write anything, and there are three cities. That's it. So this is the information. Now after this, I am never going to read this part again. Make sense? So if we want to save time, so basically whenever you are reading a data set, so what you are supposed to do, write down the information that is required, और उसके बाद छोड़ दो, फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, right? Now this is something that is going to help you build the table and solve, right? सो ये वो पार्ट है जो शायद हमें 2 बार पढ़ना पड़े या 3 बार पढ़ना पड़े, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है? सो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि बात किन मतलब अपना डेटा सेट जो है वो किस चीज का डेटा सेट? ट्रैवलर्स का, हाँ है ना, राइट? और जो ट्रैवलर्स की कैटेगरी है वो क्या है? वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? सो ट्रैवलर्स कैन बी बाइफर्केटेड इन 2 ways. One on the basis of gender, ठीक, सेकेंड on the basis of city, ठीक। इसके अलावा और कोई कैटेगरी है? On the basis of gender and on the basis of city. So we have a total of 2 parameters, right? So हमारे पास जब भी 2 पैरामीटर होंगे, so what we are supposed to do, we are going to build a table, ठीक है? और 2 पैरामीटर में जो टेबल बनेगी वो हमेशा ऐसी टेबल बनेगी,
ये वाली, कि यहां पे हम एक काम करेंगे कि एक नाम दे दिया हमने, सिटीज के नाम दे दिए, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, 3 सिटीज के नाम दे दिए हमने, राइट। फिर क्या करेंगे? सो इन रो आई हैव पुट cities and total. In column we are going to write down male, female, child or children and total. So whenever you have a data set that can be bifurcated in 2 ways, उसका अप्रोच यही है, और कुछ नहीं करना है। ये टेबल बनाओ, टेबल फिल करो, ठीक है। सो यहां तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाली लाइन तक। इसके पहले तो हमें कुछ करना नहीं है, 3 कैटेगरी हमने जो फिगर आउट करना था कर लिया। अब बताओ, अब पहली चीज क्या करेंगे हम? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू? The number of passengers from city was 35%. 35% किसका? टोटल। सो 35% का मतलब हो गया 35/100 इंटू 24,000, ठीक है। इस कैलकुलेटर अलाउड ड्यूरिंग द एग्जाम? ठीक है। सो हमको बेसिकली करना क्या है? 35 इंटू 240 करना है, ठीक। अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? तो इसको जल्दी करने का तरीका ये है, आई एम गोइंग टू राइट इट एज, ठीक है। सो इसको 35% ऑफ 24,000 करना है। जल्दी ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे लिख लेंगे, 35 कैन बी रिटन एज 70/2 ऑफ 240, 120, 12 into 7, 84. This is 8400. This is how we are supposed to calculate. यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट नो द टेबल ऑफ 24, यू डोंट नो द टेबल ऑफ 35. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, 35 को लिखो 72/2, 70/2। अगर किसी नंबर को 45 से मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 45, आई एम गोइंग टू डू 90/2। सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट, ठीक है। सो यहां पे अपने सी के बंदे आ गए। अब सो बेसिकली अब अगर सी के बंदे आ गए तो अब that line I have used, right? So I'm not going to do it again. Okay. So this line I have already used. Okay. So this is 35%. ये भी हो गया, अब यूज नहीं करना है। The total number of males that traveled from the 3 cities was 9,000. जितने मेल हैं, टोटल मेल कितने हैं? 9,000. Okay, I made a mistake. I made a blunder over here. That is, I'm sorry. और ये जो मैंने किया है, that is total C वाले जो लोग होने चाहिए, they should go here. 8,400 is total number of people from C. Total number of males are 9,000. Whereas the total number of passengers from city C was 100 less than that of city B. तो इसका मतलब सिटी बी में कितने लोग? राइट रीवा, देखो बेसिकली अगर तुम्हें किसी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आई नीड टू मल्टीप्लाई 15 बाय लेट्स से 28. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट 15 एज 30/2 into 28. तो ये कितना आ गया? 14 into 30. ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, राइट। सो दैट्स हाउ आई गेट थिंग्स, गॉट इट? सो कोई जादू नहीं है, इट्स जस्ट राइटिंग दिस इनटू सम डिफरेंट फॉर्मेट। मेक सेंस? ठीक है। नाउ टेल मी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम सिटी बी? सिटी बी में टोटल लोग कितने होंगे? The total number of passengers from city C was 100 less than people from city B. So city B में total है 8,500, right? So यहाँ पे 8,500. Now tell me quickly what is the total number of people from city A? Very nice चंद्रलेखा। अब city A के लोग कितने होंगे?
वेरी नाइस हरी. Now, what is the total number of people from city A? That is very nice, Priyanshi. That is going to be 7,100 because total sum of all three people, all three values should be 24,000. I got the total number of people from city A, city B, city C. I got total males as well. Now, so basically यहाँ तक हमने पूरा कर लिया. There are 2,500 children who boarded flights from city B. So city B and children, that is 2,500. ठीक है. And whereas number of adult males and females were equal from the same city. मतलब बी में 20 से 2500 तो चिल्ड्रन है एंड मेल और फीमेल बराबर है. सो टोटल 8,500 लोग हैं, उसमें से 2,500 चिल्ड्रन है. तो मेल कितने होंगे, फीमेल कितनी होंगी? हाँ, सो मेल और फीमेल कितने कितने होंगे? दोनों 3,000 ईच होंगे क्योंकि 8,500 में से 25 तो चिल्ड्रन हो गए, बचे 6,000, दोनों बराबर हैं. सो 3,000 होंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो नाउ 3,000 मेल्स, 3,000 फीमेल्स, 2,500 चिल्ड्रन. ठीक. अब इसके आगे क्या कह रहे हैं? नाउ द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी वाज 5:6. ठीक है. सिटी ए में एक्स मेल, सिटी बी में 3,000 मेल्स, और दोनों का रेशियो हमको गिवन है 5:6. तो यहां से तो कट के 500 आ गया. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सिटी ए? दैट शुड बी 2,500. बात समझ में आई? Number of males in city A was X. Number of females in city number of males in city B is 3,000. दोनों का रेशियो 5:6 गिवन है. उससे अपने एडल्ट मेल्स आ गए A के. This is 2,500. This is 3,000. 5,500. Right? ठीक है. अब C में कितने मेल हैं? तो सी में कितने मेल होने चाहिए? टोटल सम 9,000 होना चाहिए. सो सी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सी? दैट इज 3,500. वेरी नाइस प्रियांशी, वेरी नाइस चंद्रलेखा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो यहां से आ गया. ठीक है. अब हमको एक दो वैल्यू और चाहिए, अपना सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है. अब अपन देख लेते हैं. द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी ए वाज 2/3 ऑफ सिटी बी. फीमेल्स जो हैं ए में वो इसकी 2/3 है. मतलब 2/3 ऑफ 3,000 कितना होगा? 2,000. ये तो आ गया. 7,100. हाँ. तो रीवा, बीच में बताओ, जहां पे कर रहे हैं वहां पे एक बात बताओ, जो चीज समझ में नहीं आ रही उसी टाइम पे क्यों नहीं बोल रही हो? ठीक है. हर पॉइंट पे. अच्छा देखो, ये सी की वैल्यू निकालते हैं. सो ये ए में 2,500 है, ये 2,000 है, और सी में कोई नंबर है, और तीनों मिला के 7,100. सो व्हाट आई हैव 2,500 प्लस 2,000 प्लस x, एंड दैट इज इक्वल टू 7,100. राइट. तो ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू 7,100 माइनस 4,500. तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 2,600. बात समझ में आई? हाँ ना? ठीक है. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सिटी ए. सिटी ए में कितने चिल्ड्रन है? 2,600. एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी, बोथ आर इक्वल. सो सिटी ए में 2,600 चिल्ड्रन, तो सिटी सी में कितनी फीमेल्स होनी चाहिए? 2,600 फीमेल्स. क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? इक्वल.
Now, what is the total number of females we can have? Add all the numbers. 2000 plus 3000 plus 2600. So this comes out to be 7600. Clear? This is 3500. This is 2600. And that is going to be, and तीनों का sum कितना आना चाहिए? 8400. That comes out to be 2300. कौन से वाले टोटल रीवा? So this comes out to be 0, 0, 6, 5, 11 और 3, 14 और ये आ गया 7400. What are the totals we are talking about? Are we talking about 7100? 8400 is total number of 8400 is total number of passengers from city C. Given है ना ये बात तो? हाँ, total number of passengers from city C is 35% of total passengers. So total passengers कितने होंगे? 24,000 total passengers हैं. उसका 35% जो होगा वो अपना सिटी सी में होगा. So 24,000 का 35% 8400. Got it? And city C is 100 less than B, so it means B में 8500. और इन तीनों का सम मिला के 2400 होना चाहिए, तो A की वैल्यू 7100 आ गई. क्लियर? ठीक है. हाँ, तो 100 लेस है. अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं और तुम्हारे पास मुझसे 100 रुपए कम है, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? C is 100 less than B. B C से कम नहीं है. C जो है C B से कम है. C 8400 है और C B से 100 कम है, तो B कितना होना चाहिए? राइट. तो B C से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं. ओके, नाउ पहला क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर सिटी बी से कितने होंगे? इसको करने का कोई तरीका है? वेरी नाइस प्रियांशी. कैसे करेंगे हम लोग इसको जल्दी से? देखो, सिटी बी से कितने पैसेंजर? सिटी बी से टोटल 80. अच्छा देखो, सिटी सी से कितने पैसेंजर? 35%. दैट इज 8400. राइट. तो सिटी बी से कितने पैसेंजर्स? 8500. वेरी नाइस प्रियांशी, दैट्स अ वेरी गुड लॉजिक. सो जो बी का परसेंटेज होना चाहिए वो 35 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए. विच ऑप्शन इज लिटिल ग्रेटर देन 35? ऑप्शन ए. गॉट इट. यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग. गॉट इट. अब let's come to question number 2. What does it say? 4% of the passengers that booked the ticket did not travel from C. What is the total number of tickets that were booked from city C? So let's say total number of tickets that are booked are T. उसमें से 4% लोग ट्रैवल ही नहीं किए. So what percent of people are traveling? That is 96% of total tickets are travelers. सिटी सी से ट्रैवल कितने लोग करें? 8400. राइट. So this comes out to be 24. This comes out to be 25. So total number of people are going to be 8400 into 25 divided by 24. 24 3 72
12,350। अब इसको कैसे करेंगे? सो वी कैन राइट इट एज 350 इंटू 50/2. 35 into 5 is going to be what? 175 divide by 2. So this value comes out to be 8750. Clear? Now question number 3. जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा? Question number 3. What's the answer? Very quickly. सिटी ए से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ? Very nice, Hari. Very nice, Priyanshi. So, what is the total number of people from city A? That's, I think, 7,100, right? Is it 7,100? Yes. What is the revenue we are talking about? We are talking about a revenue of 4,500. So, this is going to be 45 into this. So, I am going to write 79 into 90 by 2. So this comes out to be 96302. So this comes out to be 3195. That is going to be the answer directly. ठीक है. अगला वाला क्या होगा? Find the ratio of female travelers to total travelers, total children, total female to total children. So what is total female? 76. What is total children? 74. So 76 is to 74. So that's going to be 38 is to 37. Those are cut there. Very nice. So basically, can we solve these kind of sets very quickly next time onwards? ठीक. अगला वाला सेट लेते हैं. जल्दी करना. ठीक. Think what you are going to do. Figure out first of all whatever data you are getting. Write it in such a way so that you don't have to read it again and again. Read it slowly, solve it slowly, and once you have filled the table, so table भरने में बहुत टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. If you know the tables, if you know the ways how to calculate things, right, like breaking a number into ratio 4 is to 5, 2 is to 3, 3 is to 4. So if you know how to convert numbers in ratio, and if you know how quickly you can calculate, think you are good to go. कोई कोई भी सेट में 5 से 7 मिनट, मे बी 8 मिनट, उससे ज्यादा कभी नहीं लगेगा. कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी तो और जल्दी हो जाएगा. ये वाला सेट करते हैं एंड रीड इट इन सच ए वे सो दैट यू डोंट हैव टू रीड इट अगेन, क्योंकि 4 क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे. So I am giving you 5 minutes. Read it, solve it, then we'll discuss.
Are you done? Okay. Now let's see what does it says. Cake Forever is a bakery that sells cakes and brownies. So important point is cakes and brownies. केक और ब्राउनी दो चीज की सेल हो रही है, वो अपन लिख चुके हैं. ठीक. The details regarding the sale of brownies and cakes at the shop of Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. अपन ने टेबल में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे भी लिख लिया. ठीक है. Remember this, we are not talking about Thursdays. Now, here comes the data. The number of cakes sold by shop is 560. Done. Which is 40% more than the number of brownies sold. So what is the number of brownies? I don't know. I have assumed number of brownies are X. So cakes are X plus 40% of X. Right? So I can say 1.4 times X is equal to 560. So total number of brownies comes out to be 400. इतना तो आ गया अपने पास. Right? So this comes out to be 400. ठीक. उसके बाद डेटा फिल करना शुरू करते हैं. ठीक है. On Monday, the shop sells 20% of the total brownies. तो अच्छा देखो, 400 का 10% क्या? 40. 20% क्या? 80. That's it. On Wednesday, it sells 1/4 of the total number of brownies. So 1/4 of 400 is 100. ये भी आ गया अपना. Sorted है. The ratio of brownies sold on Monday and Tuesday is 4:5. We have done in the previous question how to calculate ratio. Let's say Tuesday it's T. So 80 upon T is equal to 4 by 5. So this is going to be 20. So on Tuesday it becomes 100. 100, 200, 280. तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 120. सॉर्टेड. ठीक. इतना तो आगे ब्राउनीज का तो कुछ भी होगा कर लेंगे. नाउ द टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक टुगेदर सोल्ड बाय द शॉप ऑन द वेंसडे इज 240. वेंसडे को टोटल है 240, ब्राउनीज है 100, सो केक हो गया 140. ठीक. द रेशियो the ratio of total number of cakes sold by the shop on Friday and Monday was 3:4. So let's say this value is 3x, so this value should be 4x. 45% of total number of cakes sold on Tuesday. कितना होगा? So that is 45% का मतलब 40 by 100 of what? 560. 0 से तो कट गया. अब यहां से कितना आया? 5 से काट दिया 9, यहां से काट दिया 28 और ये पूरा कट गया. सो अपना आया 9 into 28. सो 9 into 28 जैसे नंबर को अगर हमें क्विकली करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 28 into 10 minus 1. So that comes out to be 280 minus 28. So ये अपना कितना आ जाएगा? that comes out to be 252. तो ये हो गया 352. So 560 में 140 ये चला गया, 252 ये चला गया, बचा कितना? 168. 168 किसके बराबर होगा? दैट इज गोइंग टू बी 3x plus 4x मतलब 7x. सो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? x कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 24. So 24 into 3 72. This comes out to be 96. So this comes out to be 176 and this comes out to be 192. That's it. We are good to go. खत्म हो गया. पहला क्वेश्चन. The total number of brownies sold by the shop on Friday. So brownie Friday को कितनी है? 120. Is what percent of the number of brownies sold on Monday? Monday को कितनी है? 80.
So 120 is what percent of 80? So 120 divided by 80 into 100 कितना आएगा 150. आंसर ऑप्शन डी. दैट्स इट. अगला क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए. What is the answer of question number 6? Very nice, Priyanshi. Total number of brownies and cakes on Monday is 176, and brownies and cakes on Friday is 192. So we are going to get 176 is to 192. Very nice, Chandralekha. Very nice, Riva. Are you getting a hold of it? Now, question number 7. Question number 7. What is the answer? What is the absolute difference between total number of brownies sold on Monday and Tuesday together and total number of cakes sold on Wednesday and Friday? Very nice, Priyanshi. Very nice. Cake sold Monday, Tuesday, that is 180, and cake sold कितना 140 plus 72, that is 212. So that is going to be 212 minus 180, and that comes out to be 32. That's option A. Very nice. Now, what is the answer of question number 8? So basically, this question is talking about what is the average number of items that are being sold on Tuesday and Wednesday. Okay, Priyanshi. Okay, Chandralekha. Oh, that was for the previous question. What is the total number of brownies and cakes on Tuesday? That is 352. On Wednesday, that is 240. So, what is the sum? That is 352 plus 240. Average is divided by 2. That is going to be 592 divided by 2. So this comes out to be 296. That's going to be option B. Understood? समझ में आया? Very nice, Chandralekha. Very nice. Very good. So everyone is comfortable in these kind of sets? ठीक है. So now you know the timings: Monday legal, Tuesday QT, Thursday English, Friday logical. So basically stay tuned, and whenever you have a doubt, I would say that whatever we are doing, and if you do not understand something, I would say write it in the comment box. Fine, what I'm going to do, I'm going to pick that in the next session. Or if you want something to discuss, like if you want me to discuss certain set, we can also discuss that set in the next session. Fine. So whatever you have, do let me know. We can arrange in such a way that we can have the session, we can entertain your query in the next session, right? So if you have any doubt,
anyways, right? Just drop a message in the comment box, and we'll get to you. Or you can, for the inquiry, you can definitely, you have the number, right? So with this, we conclude this. Priyanshi, yes, we can do allegation in the next session. If you want, we can cover some theory as well in the next session. Find that how, in what kind of questions allegation is used. So basically, people generally think allegation is all about mixtures. You can't use allegation apart from mixtures, right? But allegation is something that can be used in many places. You can use allegation in profit and loss. You can use allegation in other things as well. So it's an important thing, right? So if possible, I'll cover allegation. Fine. So just do one thing. Just do one thing. Uh, on I think it's going to be on Tuesday. So next session. So what we can do is, um, um, you can drop a message in the comment box by, I think, that tomorrow, right? So I'll get something ready by tomorrow. Fine. So we can discuss it. Priyanshi, you uh, have we met? Have I taught you before? Okay, okay, okay. There was someone, I think I taught that person before. I'm in the last session. I don't know who was it. Okay, okay, okay. Fair point. Okay. Bye bye. Take care. Kushagra maybe. If I had taught Kushagra, then Kushagra must have my number. So if you want, you can take my number from him. You can drop me a message. We can discuss something over the call, right?